धोलावीरा। क्या आपने इस नाम को कहीं सुना है? ये एक्चुअली हिंदुस्तान का सबसे पुरानी अराउंड 4,500 साल पुरानी शहरों में से एक है। भूत से रोड टू हेवन एंड वुड फॉसिल पार्क देखने के बाद हम आप पहुंचे हैं धोलावीरा, विच इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये गुजरात सीरीज का हमारा दूसरा एपिसोड है। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर जरूर देखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जानी जाती है 5 मेन सिटीज मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गनेरीवाल और धोलावीरा। आज हम धोलावीरा को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। This place is related to Indus Valley civilization and Dholavira is one of those cities. This is so ancient place that everyone should visit this place to experience the culturally rich civilization. Archaeologists initially found a large pot and seeing that Jagatpati Joshi, who is an Indian archaeologist, discovered the Indus Valley site of Dholavira in the year of 1965. But its excavation starts from 1990 and took 15 years to discover this place. In 2021, it has been declared as UNESCO World Heritage Site, which is one of the 4th one in Gujarat. Only 20% excavation has been completed and 80% remains. Dholavira is renowned for its sophisticated urban planning, water management system, and remarkable architecture, including well-planned streets, reservoirs, and large buildings constructed with stones and mud bricks. Excavations at Dholavira have been revealed insight into the Indus Valley civilization's economy, social structure, trade networks, and technological advancement. The site provides valuable information about ancient urbanism and early civilization in the Indian subcontinent. Excavations at Dholavira have unearthed a well-planned city with sophisticated urban infrastructure, indicating a high level of urbanization during the time period. One of the most striking features of Dholavira is water management system, which include reservoirs, dam, channels, and tanks. These structures suggested that the residents of Dholavira had advanced knowledge of hydraulic engineering and were able to efficiently manage water resources. The city was divided into distinct zones, including a citadel, a middle town, and a lower town. Its archaeological remains provided valuable insight into various aspects of Harappan life, including their economy, trade network, social organization, and cultural practices. The discovery of artifacts such as seals, pottery, jewelry, and tools suggested that Dholavira was involved in long-distance trade with other regions of Indus Valley civilization and beyond. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कालो डूंगर, जो कि कच्छ रीजन का सबसे ऊंचे पहाड़ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक मैग्नेटिक हिल, is a prominent geographical feature located near Run of Kutch in Gujarat. Kalo Dungar is situated in Kutch district of Gujarat, approximately 97 km from Bhuj. रास्ते पे हमें मैग्नेटिक जोन का एक बोर्ड दिखा। हमें भी थोड़ा डिफरेंट फील हुआ, तो कार से उतरते ही अपने आप कार पीछे की तरफ मूव होने लगा।
It's unbelievable. How can a car can be dragged by magnetic field against the elevation? इट्स मैजिकल राइट। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आना पड़ेगा कालो डूंगर। फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट वी ड्रॉप सम वाटर ऑन द रोड एंड इट्स मैजिकल। पानी ढलान के विपरीत ठीक उल्टा दिशा में बहने लगा। इट्स ट्रूली मैजिकल, इजंट इट? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कालो डूंगर को एक्सप्लोर करने। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द कच्छ रीजन which is an elevation of around 462 meters above the sea level. It is composed of black volcanic rocks, giving it its distinctive dark coloration. These rocks are believed to be formed by volcanic eruptions millions of years ago. The summit of Kaludungar offers panoramic views of stunning landscape, including the vast expanse of the Run of Kutch, the Great Run and Little Run, as well as the nearby villages and salt marshes. Actually, you can locate the last bridges in between India and Pakistan. After experiencing the stunning sunset and natural beauty, we started our journey back to our hotel. और रास्ते में हमें लकीली वाइल्ड लाइफ का एक झलक मिल गया। इट्स ऑसम, इजंट इट? अगर आपको इस एनिमल का एग्जैक्ट नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।